Okay, let's start with the next part for elasticity, mechanical properties of solids. The title that we need to start with is stress. Stress. Now, stress word हम लोग in general भी जानते हैं, थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म्स में जानते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सर्शन के कारण या किसी टेंशन के कारण या किसी मल्टीपल रीजन से हमारी बॉडी में या हमारे माइंड में स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस मतलब कि बॉडी जो है वो किसी तरह का डिस्कम्फर्ट फील कर रही है। फॉर एग्जाम्पल सीधी सी बात है स्ट्रेस। तो जब आप किसी सॉलिड को उसके ओरिजिनल शेप और साइज से अगर डीफॉर्म करेंगे, उसको बदलने की कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा फोर्स लगा के, है ना, इंटेंशनली या जबरदस्ती बोल लो कि आप एक सॉलिड के कंडीशंस को चेंज कर रहे हो, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक स्ट्रेस जनरेट होगा। बिल्कुल ऑब्वियस बात है, उस बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होगा। ओके, और स्ट्रेस का सॉलिड के टर्म्स में यहां पर ये मीनिंग है कि जब किसी बॉडी को डीफॉर्म किया जाता है तो वो बॉडी ये ट्राई करती है कि किसी तरीके से उस डीफॉर्मेशन को जो है वो अवॉइड कर सके या अपने आप को ओरिजिनल शेप और साइज में ला सके। उसके लिए बॉडी अपने अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करती है। जैसे जैसे अपन ने स्प्रिंग में पढ़ा था कि हमने स्प्रिंग को अगर एक्सपांड किया है, देन स्प्रिंग विल स्टार्ट generating the restoring force to bring itself back in the original position. That is stress. So that stress is correlated directly to that restoring force which is generated inside the body, internally in the body, to bring itself in the initial state. Okay, so we'll have a statement here. Let's note down the statement first for stress and then we'll discuss something more over it. The internal restoring force acting per unit area of a deformed body is called stress. As per the statement, हम इसका एक एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं where stress is equals to restoring force upon area. This becomes the expression for stress, restoring force upon area. Okay, now we'll take the unit of stress from the expression itself. In the numerator part, we have restoring force. That means simply force, and force as a unit of Newton. In the denominator part, we have area, which has a unit of meter square, which can be written as m minus 2. M minus 2. This will be an SI system. This can also be written as dyne per centimeter square for CGS. From here, we can also have the dimensional formula.
from the units itself, m L T minus 2 for force, L2 for area, which cancels and generates m L minus 1 T minus 2 for stress. One more thing, the unit and dimension clearly corresponds to pressure, which has the same formula, unit and the dimension. So stress is dimensionally equivalent to pressure, which is also expressed as force upon area. So the next topic comes is types of stress. Okay, we'll be covering them in a comparative way. Types of stress. There are basically two categories of stress, broadly categorized into two types: normal stress, tangential stress. नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस, इन दोनों को वन बाय वन हम समझते हैं. इसी के नीचे इनका स्टेटमेंट लिखेंगे कंपैरेटिव फॉर्म में. पहले नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे. नॉर्मल, ओके, स्टेटमेंट लिखिए इसमें. व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स when a deforming force acts normally, or we can say perpendicularly, over an area of body, then stress generated is called normal stress. The normal word here clearly indicates that the force, deforming force, is acting normally on the body, normally on the area of the body. Normally we can resemble perpendicularly. So whenever we apply a deforming force perpendicularly on the surface of the object, then the stress or the internal restoring force generated per unit area inside the body is called normal stress. Normal stress. Normal stress is further categorized into two parts. So we'll consider those two parts. Normal stress can be further categorized into two parts: tensile stress compression stress. टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेशन स्ट्रेस. नाउ अगर हम किसी भी बॉडी को
बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करें या उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर हम कभी भी किसी बॉडी को डिफॉर्म करते समय उसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं या उसको हम उसकी बॉडी के साइज को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो जो स्ट्रेस सेट होता है दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। ऑन द अदर हैंड, अगर हम किसी बॉडी की लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे वायर है, वायर की लेंथ को आप डिक्रीज कर रहे हो या किसी चीज को आप कंप्रेस कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा दैट इज कंप्रेशन स्ट्रेस। सो दीज आर द टू एक्सट्रीम्स। एक में हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, एक में हम लेंथ को कम कर रहे हैं। ओके, सो विल हैव द स्टेटमेंट हियर। टेंसाइल में लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज in the length or extension of the body, and on the contrary we can have the compression stress that is due to decrease in length or compression of the body. Now if we talk about tangential stress, in this the deforming force acts tangentially to the surface of the body. I'll explain the condition with a diagram then. एक statement लिख लेते हैं. When deforming force acts tangentially, as the name indicates, tangentially to the surface of the body, to the surface of the body, then stress generated is tangential stress. Let's see the situation how this is occurring. इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास कोई स्पॉन्ज का क्यूबॉइडल स्पॉन्ज है, क्यूबॉइडल स्पॉन्ज है, उसके नीचे की एक सरफेस पे आपने ग्लू लगा के उसको फ्लोर पे स्टिक कर दिया, तो वो जो स्पॉन्ज है वो एक जगह से फिक्स हो गया, अभी फ्लोर पे फिक्स हो गया। अब आपने ऊपर उसके हाथ रखा, उसकी सरफेस पे हाथ रखा और आप उसको आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो आप सोचिए जिस तरह की सिचुएशन बनने वाली है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस में आती है। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं। हमारे पास एक क्यूबॉइडल पीस ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि अभी बिल्कुल सिमेट्रिकली अपनी पोजीशन में है। अब अगर हम इसके ऊपर टेंजेंशियली एक फोर्स लगाएं, अगर हम इसके ऊपर इसकी अपर सरफेस पे टेंजेंशियली उसके ऊपर हाथ रख के इस पे सिर्फ अपर सरफेस पे फोर्स लगाएं, तो जो सिचुएशन डेवलप होने वाली है वो कुछ इस तरह की होगी कि ये जो लेंथ वर्टिकल है, हाइट वर्टिकल है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, एक एंगल पे बेंड हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो क्यूबॉइड का पीस है वो आगे एक्सटेंड हो जाएगा थोड़ा सा, फ्रॉम द बैक साइड, फ्रंट साइड, बट द लोअर सरफेस इज नॉट मूविंग, द शेप हैज डिफॉर्म्ड। अब वो स्लैंटेड क्यूबॉइड जैसा बन जाएगा, इट विल लुक समथिंग लाइक स्लैंटेड क्यूबॉइड, स्लैंटेड क्यूबॉइड लाइक दिस। तो इसको आप प्रैक्टिकली होपफुली विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि एक स्पॉन्ज के पीस को हमने जो है इस तरीके से
डीफॉर्म कर दिया, उसको ट्विस्ट कर दिया, आगे की तरफ थोड़ा सा झुका दिया, बेंड कर दिया एट सम एंगल, थोड़ा. So this, when such type of deforming force is applied, the stress generated within the body is called tangential stress. This is the fixed face, lower one. This has to be fixed for applying the tangential stress. For all these stress, the general formula is force upon area. The force that we are applying, the deforming force that comes into play upon the area on which we are applying the force. So it becomes stress. So this is about stress and the types of stress. Next topic is strain. ये भी हम लोग रेगुलर टर्म्स में कहते हैं कि मसल में स्ट्रेन आया है. जैसे मोच आ जाती है या बेंड हो जाता है लेग, तो हम कहते हैं कि मसल्स में स्ट्रेन आ गया, है ना. तो स्ट्रेन जो है यहाँ पे एक्चुअली एक रेशो है जो कि हमें ये दिखाता है कि जो बॉडी है वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से कितना डिफॉर्म हुई है. द एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन is represented by the term strain. Okay, so we'll have the statement, and the formulas and the concept is clearly based on the statement itself. Strain, it is the ratio. अब देखिए रेशियो की बात आ गई. रेशियो मतलब कंपैरिजन. ओके, so it is clearly the comparison of the original configuration and the new configuration, the deformed configuration. It is the ratio of change in configuration Here configuration corresponds to length, breadth, height, volume, surface area, anything. Configuration to the original configuration. To the original configuration. Original configuration. As the statement is clearly suggesting, we'll note down the expression for this. So strain is equals to change in configuration divided by original configuration. Original configuration. And since it is the ratio of two similar quantities, hence strain is unitless and dimensionless quantity. Unitless and dimensionless quantity. Since it is a ratio of two similar quantities, hence it is unitless and dimensionless. Now, let's move on to the types of strain. We'll continue with the types of strain in the comparative form again. Comparative forms are always easy to understand and learn, to remember, recognize. We have three types of strain depending upon the part of the configuration which has changed. So this is longitudinal strain, volumetric
strain, shearing strain. Three types: longitudinal, volumetric, and shearing. These are all depending upon the part of the configuration which has changed on deforming the body. Let's see what it includes. They can be simply understood by their expressions that the part which is changing is included directly. Longitudinal corresponding to length. लॉन्गिट्यूडिनल, जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जनरेट होगा. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जनरेट होगा विच इज डिफाइंड एंड एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन लेंथ, change in length upon original length. Very clear. Change in length upon original length, or can be expressed as delta L by L. Change in length upon original length is longitudinal strain. Now, the next one is clearly understood from the name itself. The volume of the object or body is changing. So it will be expressed as change in volume, change in volume upon original volume. Change in volume upon original volume, which can further be expressed as delta V by V. Delta V by V. Okay. Now, shearing strain is a bit different. We will require a diagram to understand this one, for the understand the expression. Shearing strain is in the same condition that we studied for tangential stress. Same situation. So if we already have such a body with a cuboidal or cubical shape, and we had applied the force on the upper surface, the new configuration has been like this. Then the red one is the new configuration, which the body has extended or modified like this. This is the new configuration. The red one is the new structure. Considering that the vertical surfaces have moved some theta angle from all the faces, and there has been an extension of delta L from the original point, and the length of the side is L. Considering these dimensions, shearing strain is expressed as theta, which has been calculated from tan theta, that is perpendicular upon base. The perpendicular is delta L and the base is L. This is shearing strain, which is corresponding to theta, the angle with which the surface has moved, and which is approximately equal to delta L by L. Delta L by L. Shearing strain. So the next title coming up is elastic limit. This term is important to understand the next coming up topic, elastic limit. Okay. Now, even if the body is
very elastic in nature or it has a very good elasticity, then also if it is used beyond an extended limit, it will slowly lose its elasticity. अगर कोई रबर बैंड का अपन सिंपल एग्जांपल ले लें और अगर हम उसको काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, लगातार उसको इलास्टिक, उसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कंप्रेस कर, उसको है ना, स्ट्रेच कर रहे हैं, फिर उसको कंप्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, एंड सो ऑन. सो इट स्लोली gets reaches its elastic limit. Elastic limit is basically that value of deforming force which, when applied to the body and if removed, the body is not able to gain its original shape. Being elastic in nature, अगर बॉडी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इलास्टिक बॉडी है, आपने एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, आपने जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा हटाया, इट विल कम बैक टू इट्स पोजीशन. फिर हमने थोड़ा ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, हमने जैसे उस फोर्स को हटाया, इट अगेन केम बैक टू इट्स पोजीशन. एक ऐसा लिमिट आएगा डिफॉर्मिंग फोर्स का जिसको अगर हमने अप्लाई कर दिया, तो उस लिमिट पर क्या होगा कि जब हम वो फोर्स हटाएंगे, द बॉडी विल नॉट बी एबल टू कम बैक टू इट्स इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन. That limit of deforming force is called elastic limit. That means the body at some particular deforming force and above which it cannot regain its original configuration. It will become permanently deformed, and that point of force is the elastic limit of that body. We'll have the statement. It is the upper limit of deforming force to which if deforming force is removed, the body regains its original form completely, and beyond which, that means we are crossing the limit now, beyond which if deforming force is increased, the body loses its property of elasticity. Or we can say it gets permanently, that is what we discussed, permanently deformed. The body becomes permanently deformed. Permanently deformed because the body has reached its elastic limit.